अच्छा आज हमें पढ़ला रॉकेट प्रोपल्शन रो डेरिवेशन क्लियर देखो रॉकेट प्रोपल्शन पर आज हमें डिटेल्स पढ़ला Actually, rocket propulsion को principle रहता है ना according to the principle of conservation of linear momentum. According to the principle of linear conservation of linear momentum. Suppose this is a rocket. Clear? इटा है गोटे rocket. तो initially rocket रो mass थिला m0 और velocity थिला v0. बुझेला? After t second its mass becomes t second ପରେ ତାର mass कोन हे गला m हे गला आउ velocity कोन हे गला v हे गला बुझेला तापरे जेतोळे एठी हम कोन कले ना रॉकेट रे फायर लगेले एठी निया लगै नथिले एठी निया लगेले जेतोळे हमें निया लगै दबा कोन हबो ना रॉकेट रो मास टा ग्रेजुअली कमी जाय मन करो मास कमिला dm जदि मास टा कमिबो वेलोसिटी रा कोन बढ़िबो कारण जेते अधिका माने कोन हुए नियाना आमे लगे न थे फर्स्ट केस तापर कोन करले ना निया लगे सेकंड तापर कोन करले ना निया जतले लागी गला एग्जॉस्ट गैस उडा को क्वाड पासिबो ना एग्जॉस्ट गैस विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन होना नहीं तो एठे मन करो एग्जॉस्ट गैस रो वेलोसिटी हला vg कोन vg तो vg मींस velocity of the exhaust gas velocity of the exhaust gas the velocity of the exhaust gas is expressed in downward direction तो exhaust gas गुडा को downward direction में move करछि तो से जति की downward direction में move करबो रॉकेट टा सेते जोर को बुझिबो ताले एबे velocity कोन हला बढ़िला v plus dv dv हला increase in velocity बुझियला ना बुझियला नहीं समझते क्लियर ताले according to conservation of linear momentum according to conservation of linear momentum initial linear momentum is equal to final linear momentum या को हम कहते conservation of linear momentum initial linear momentum केते हला mass into velocity final linear momentum केते हला ना m minus dm एडा कमिंग हेला velocity केते हला v plus dv बुझला तापर देखो हमर रॉकेट मूव करतला ऊपर को किंतु एग्जॉस्ट गैस को आड़ जाउतला तो एग्जॉस्ट गैस रो वैल्यू बहुत अल्प थिला तो कोन हो dm vg ताहले एबे हम चलो कैलकुलेशन करिया mv एबे मल्टीप्लाई करो m v हला mv प्लस m dv कले माइनस dm into v कले माइनस dm into vg कले mv रे mv कटि गला बुझियला एबे रहिला केते ना 0 इज इक्वल टू बुझि पाले ने एटा तो कहो देखि दो माइनस dm into dv this term is very small so it can be neglected okay तो एबे रहिला केते m dv minus v dm minus vg into dm क्लियर देखो एठी dm अछि एठी भी dm अछि तो हमें dm कॉमन नहीं परिबा ना परिबा नहीं ताले एबे हम लिखि परिबा आर कोड को नेबे minus m into dv is equal to minus v plus vg into dm तो माइनस रे माइनस कैंसिल हो जिवो ताले m into dv is equal to
केते हला रे v प्लस vg into dm मने करो let u minus u is equal to vg plus v, that is the relative velocity of the rocket with respect to the exhaust gas, with respect to क्या, with respect to the exhaust gas, relative velocity of the rocket with respect to the exhaust gas. ताहले एठा हम कोन कर परिबा m into dv is equal to minus u into dm लिख परिबा ना बुझेला नै तो एबे कोन करबा ना dv is equal to minus u dm by m करबा बुझेला एबे कोन करबा इंटीग्रेट करबा dv को इंटीग्रेट करबा minus u into dm by m को इंटीग्रेट करबा इनिशियली वेलोसिटी थिला केते v0 तापर वेलोसिटी केते हला v हला इनिशियली मास थिला केते m0 तापर मास हला केते m हे गला क्लियर तो हमें इंटीग्रेट करके आंसर करबा ओके dv को इंटीग्रेट कला हमको कोन मिलबो v मिलबो लिमिटिंग वैल्यू केते हला v0 to v एटा हला माइनस u dx by x रो इंटीग्रेशन कोइ दिली ln x तो एटा कोन हिजो ln m हिजो केते हिजो ln m एटा केते लिमिटिंग वैल्यू m0 to m केते हिजो m0 to m अरे जानि न जदी एटा जानि दाओ इंटीग्रेशन ऑफ dx by x is equal to ln x केते हुए ln x ताहले मने करो लिमिटिंग वैल्यू एई भलिया दे दिबो dx by x a to b मने करो दे दिबो ये हिजो ln x लिमिटिंग वैल्यू केते लिखिबा a to b लिखिबा एटा अपर लिमिट केते b लोअर लिमिट केते a तो ln b minus ln b minus ln a को लिखिबा ln b by a कोन लिखिबा ln b by a क्लियर समझते ताले एई जे कोन हिजो एठी अपर लिमिट केते v लोअर लिमिट केते v0 तेन पर हम लिखिया v minus v0 इज इक्वल टू माइनस u ln m minus ln m0 लिखिबा ना लिखि परिबा नै एबे a माइनस ता को भीतर भर्ती कर दबा जदी हम भीतर भर्ती करिया केते हो को v minus v0 इज इक्वल टू u ln m0 minus ln m हो माइनस ता ए माइनस टा प्लस हे जो प्लस टा माइनस हे जो ताले ये कहते हैं जो v minus v0 is equal to u ln m0 by m u ln m0 by m कारण ln x minus ln b टा कहते हैं ln a by b ताले ये कौन है जो ना v is equal to v0 plus u ln m0 by m এটা হলা ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি অফ দ্য রকেট দিস ইজ দ্য ইনস্ট্যান্টানিয়াস যে কোনসি সময়ে ওটা রকেট র এটা হলা ভেলোসিটি বুঝিলা কি রে বুঝিলা না বুঝিলা নাই দিস ইজ দ্য ইনস্ট্যান্টানিয়াস velocity of the rocket क्लियर समझते हैं क्लियर होला नहीं তাহলে এটা হলো কোন না দিস ইজ দ্য ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি অফ দ্য রকেট তার মানে যে কোনসি সময়ে গোটে রকেট র এতিকি ভেলোসিটি থাকে বুঝিলা আচ্ছা ডায়াগ্রাম पे টিকে জায়গা সেটতে লেখো the rocket propulsion is takes place the rocket propulsion is takes place according to the principle of conservation of linear momentum
Okay, let m0 and v0 is the mass and velocity of the rocket before the fire is given to it. No? At any instant, its mass is m and velocity is v. Clear? When the fire is given to the rocket, then its mass is gradually reducing let it dm, and velocity is increasing. Okay, and Vg is the velocity of exhaust gases. Okay, तापर करो देखो burnt out of speed गोटे कॉन्सेप्ट है कौन burnt out of speed जहाँ को हमें vb बोले कहते हैं. What is burnt out of speed? That is the speed at which the rocket will move when the fuel is completely burned. जते बेले रॉकेट भितरे थिबा fuel गुड़िको टोटली बर्न हे जिवो रॉकेट टा गोटे मैक्सिमम स्पीड अचीव करे बुझियला तो सेही स्पीड को हम कहते बर्न आउट ऑफ स्पीड कोन कहते बर्न आउट ऑफ स्पीड. What is burned out of speed? That is the speed. It is the speed at which the rocket will move when the fuel is completely burnt. ताले से स्पीड का कौन थे burnt out of speed. That is Vb is equal to V0 plus U ln M0 by M. U ln M0 by M. बुझेला M0 टा कौन थी रेस्ट मास M हला कौन कहती थी इंस्टेंटेनियस मास. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट मास एंड इंस्टेंटेनियस मास. देखो इंस्टेंटेनियस मास टा केते जाए इंस्टेंटेनियस मास m is equal to m0 1 minus v square by c square root over 1 minus v square by c square root over. रेस्ट मास कहले कोन ना जते बेले आमे रॉकेट रे फायर लगेई नथिले सेते बेले रॉकेट रो जहा मास थिला
सेही मास को हम कहते रेस्ट मास क्लियर एठी c हला कोन ना c हला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर c को हम कहते वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जहार वैल्यू केते ही थाए ना 3 * 10⁸ मीटर पर सेकंड v हला कोन ना वेलोसिटी ऑफ light in any medium जे कोनो से मीडियम रे v हे थाए m = m0 डिवाइड बाय √1 - v²/c² बुझेला नेक्स्ट आसला कोन ना थ्रस्ट फोर्स थ्रस्ट फोर्स ऑफ रॉकेट कहले कोन ना देखो गोटे रॉकेट रे एग्जॉस्ट गैस गुडा को तळकु जाए और रॉकेट को आड़कु जाए ऊपर को जाए तो जो फोर्स रे रॉकेट टा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे सेही फोर्स को हम कहती थ्रस्ट फोर्स कोन कहती थ्रस्ट फोर्स बुझेला ना ताहले व्हाट इज थ्रस्ट फोर्स ना इट इज द फोर्स it is the force at which the rocket will move in upward direction rocket will move in upward direction यार फार्मूला कौन है ना देखो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स m इनटू dv by dt कहि परिबा और माइनस u इनटू dm by dt भी कहि परिबा बुझे ना तो m इनटू dv by dt कहि परिबा और माइनस u इनटू dm by dt भी कहि परिबा क्लियर तो एति की थिला रॉकेट प्रोपल्शन रिलेटेड कांसेप्ट क्लियर ना बुझेला नहीं क्लियर समझते हबो नेक्स्ट देखबे हमें फ्री बॉडी डायग्राम कांसेप्ट हम देखा फ्री बॉडी डायग्राम एटा मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट यदि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बुझी गले एठु होया को गले प्रॉब्लम सब हो लॉज ऑफ मोशन बुझे ताल देखो फ्री बॉडी डायग्राम कांसेप्ट What is free body diagram? Now free body diagram was a diagram which makes the body free from contact. मोटे बॉडी को कांटेक्ट सरफेस रु जे फ्री कराए जो डायग्राम से डायग्राम का कौन कहते फ्री बॉडी डायग्राम बुझेला व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम ना इट इज अ डायग्राम which makes the body free from contact गोटे बॉडी को कांटेक्ट सरफेस रु जे फ्री कराए सेही डायग्राम को हम कहते फ्री बॉडी डायग्राम बुझेला ना बुझेला नहीं तो या को हम काहे की यूज करंती ना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई कोन करिया पई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई इट इज mainly utilized to solve the complicated problem. Solve the complicated problems. Complicated problem को solve करिया ପାଇଁ ଆମେ यूज करथां बुझे ना तो फ्री बॉडी डायग्राम को माने जानिया पहले हमको किछि जानिया पड़े फर्स्ट जिंसो जेंति केला वेट वेट हला कोन ना एडा हला गोटे सरफेस ए सरफेस रे गोटे बॉडी थिला बॉडी रो मास हला m बुझेला ताले सब बेले बॉडी रो वेट ता वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करथाय ताले w mg हे थाय w mg तो व्हाट इज वेट ना इट इज a force
which is always acting vertically downward. Always acting केमती vertically downward. Okay, what is weight? Sir, it is a force which is always acting vertically downward. The constant weight. बुझिएला? Similarly, normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन कोन ना एटा हला गोटे सरफेस हला एबे ए बॉडी रो मास m ताले वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ताले नॉर्मल रिएक्शन को अडैप्ट करिवो परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ना नॉर्मल रिएक्शन हो गोटे फोर्स जे सब बेले सरफेस को परपेंडिकुलरली एक्ट करे सरफेस को परपेंडिकुलरली एक्ट करे एबे मते पुनो एडी सरफेस को परपेंडिकुलर है कि क्या एक्ट कर rn तल को एक्ट कर w त माने rn इज इक्वल टू केता हो w बुझेला तो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ना सर इट इज a force which is always acting perpendicular to the surface ओके नॉर्मल रिएक्शन होला नेक्स्ट आसिला हमर टेंशन कोन एटा हला गोटे बॉडी ए बॉडी रे कोन लागि जे दौड़ीला लागि जे बॉडी रे तो टेंशन दा सब बेले को एक्ट करे ना अवे फ्रॉम द बॉडी को एक्ट करे अवे फ्रॉम द बॉडी तो व्हाट इज टेंशन ना टेंशन इज a force which is always acting along the string and away from the body दौड़ी रे सब बेले टेंशन एक्ट करे टेंशन रो नेचर कोडे away from the body कोडे away from the body what is tension ना सर इट इज a force which is always acting away from the body away from the body टेंशन वाला क्लियर समझते नेक्स्ट आसिला हमरो इनर्शिया फोर्स एटा इंपोर्टेंट जिंस इनर्शिया फोर्स हो गोटे इमेजिनरी फोर्स एटा कोनडा इमेजिनरी फोर्स बॉडी रो मोशन जो पड़े थाए तार ऑपोजिट दिगरे गोटे इमेजिनरी फोर्स पड़े से इमेजिनरी फोर्स को हम कोनती इनर्शिया फोर्स कोन कोनती इनर्शिया फोर्स so what is inertia force now it is an imaginary force it is an imaginary force which is always acting in the opposite direction of the motion of the body inertia force रो फार्मूला केते हला मास इनटू एक्सेलरेशन केते हला मास इनटू एक्सेलरेशन बुझेला तो फ्री बॉडी डायग्राम को करिया कोले हमको एत्ते की जिंस बेसिक जानिया पड़ियो बुझेला हम बुझेला नै हबो देखो